Okay, so hi everyone, this is your host Melody here, and I hope you are doing absolutely amazing. So I hope आप सभी को हम लोग दिखाई दे रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे. So if we both are visible and audible to you, please let us know in the comment section. And till then, I will quickly let you know कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ताकि आप इसको अच्छे से सीख सकें. And do not worry about anything. इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पीडीएफ है, वो सारी की सारी चीजें ऐप के ऊपर अपलोडेड हैं. सो अगर आप ऐप पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड इफ इन केस आपने इस केस के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री. एंड देन ऐप के ऊपर आपको सारे प्रोडक्ट्स, इसके पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा. एंड ऑल्सो द रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेट. तो चारों की चारों चीजें ऐप के ऊपर अपडेटेड है. ऐप की भी लिंक है एंड कोर्स की भी लिंक है. Now, moving forward, quickly let me tell you कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, and I will quickly start the recording. So yes, आज का जो हमारा टॉपिक है, I guess आप सभी बहुत ज़्यादा excited होंगे because it is small cookies and cookies I guess सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मुझे तो बहुत ही पसंद है. Cookies are like होता है ना एकदम कमजोरी जैसी, वैसी वाली चीज हो जाती है. मेरे टॉप 10 कमजोरीज में से टॉप 5 कमजोरी में से यू कैन से कि वन ऑफ दीज आर कुकीज. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन. सो आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे. एंड इफ यू ऑल आर रियली एक्साइटेड, लेट मी नो. इसी कमेंट बॉक्स में से थम्स अप, हार्ट, आप बहुत सारे इमोजीज डाल सकते हैं सो दैट आई वुड नो कि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. एंड ऑल्सो आज का जो पूरा का पूरा सेशन होने वाला है बिल्कुल स्क्रैच से होगा. यानी कि हम डो से स्टार्ट करेंगे. कैसे आप डो बनाओगे, कैसे आप उसको टेक्सचर दोगे, कैसे आप उसे बेक करोगे, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले होंगे. एंड जो भी हमारी शेफ यानी कि हमारी कमलप्रीत की जो भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी आपको पता चलेंगी. ताकि आप सारी की सारी जो कुकीज हैं वो बहुत अच्छे से बना सकें. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर्स, you surely can. So I hope everybody is really excited for this session. And Kamalpreet, over to you. And you're on mute, Kamalpreet. आप unmute कर लीजिए. Thank you. Okay, so hi everyone. Thank you, Saloni, for the introduction. And hi everyone. Today we are going to make s'mores cookies. Anybody have heard about it or this campfire treat s'mores? Anybody know about it? किसी को पता है s'mores basically क्या होता है? So yes, ladies, if you know the answer, let us know in the comment section. हमें comment section में बताइए अगर आपको पता है कि s'mores cookies क्या होती है. s'mores basically एक campfire treat है, तो उनको आज हम cookies में combine कर रहे हैं उसका flavor. But s'mores क्या होते हैं या s'mores cookies किसी ने सुना है पहले? Do anybody know about the famous campfire treat s'mores, or anybody have heard about s'mores cookies? Do you know, Saloni? Just say yes or no. No, I really don't know what s'mores is. I'm just Okay. excited that we are going to make it in form of cookies. Sure. Okay. Any yes? Any Yes. in comments? So yes, we do have few comments here. So they are saying it's like a dough of chocolate and marshmallows. Yes, that's correct. And the campfire treat, s'mores. Do you know what original s'mores is? Originally s'mores क्या होते हैं वो पता है किसी को? Yes, ladies, let us know. अगर किसी ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये बहुत फेमस कैंपफायर ट्रीट है बेसिकली अमेरिकन के लिए. So s'mores is basically a very much used treat, a campfire treat for Americans. Okay, should I tell it? बता दूं फटाफट? Yes, Kamalpreet, I guess everybody is really excited here. They're like, okay, bata do aap. Okay. S'mores is basically, they put marshmallows in the skewers. They burn it over the campfire, the bonfire, and the soft marshmallows, the melted marshmallow, they put in between the layers of biscuit. One layer at the bottom, then the marshmallow, then on the top a biscuit. Basically, that is s'mores. Graham crackers basically are used. तो ग्राहम क्रैकर्स जो ग्राहम बिस्किट्स आते हैं वो यूज होते हैं, और मार्शमेलो को जो बॉन फायर होती है उसमें थोड़ा सा सेक के स्क्यूअर में लगा के दो बिस्किट के बीच में वो सॉफ्ट मार्शमेलो रख के खाया जाता है.
So, ये बेसिकली अमेरिकन जब अपनी बॉनफायर पिकनिक्स पे जाते हैं तो ऐसे खाते हैं. This is what Americans do on bonfires. So, was this interesting or not? I found it very interesting and I think हमारी जो audience है उनको भी काफी interesting लगा होगा. So yes, ladies, let us know आपको कितना interesting लगा इसे. Also, Kamalpreet, I guess your camera is not in the landscape mode. Can we do it in that? Okay, yeah, I will do it. Okay. So yes, ladies, तब तक कमलप्रीत अपना कैमरा एक बार सेट कर लेती हैं. तब तक के लिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि what the smalls are and आज हम कैसे उनको बनाने वाले हैं. So yes, without wasting any time, let's get started with it. Okay, so I have flaxseed, black flaxseed powder है. So यहाँ पे मेरे पास जो black flaxseed होते हैं उनका पाउडर है. ओके और इसमें मैं डालूंगी 3 TBSP ऑफ वाटर. पानी डालूंगी 3 TBSP. So in 1 TBSP of flaxseed powder, I'm going to add 3 TBSP of water. 1 TBSP flaxseed powder में मैं यहाँ डालूंगी 3 TBSP flaxseed, 3 TBSP water in 1 TBSP of flaxseed powder. 1 TBSP flaxseed powder में 3 TBSP पानी. And this we will keep aside. So इसको हम side में रख देंगे. Okay, this you can make an egg version also, where we will use this flaxseed powder combined with water. You will use egg instead of that. 1 egg will be used. तो आप ये कुकीज एग वर्जन में भी बना सकते हो जहां पे हम ये ऐड करेंगे फ्लेक्सीड और पानी का कॉम्बिनेशन. वहां पे आप 1 अंडा ऐड कर सकते हो if you want egg version. Okay, so coming to the next, we have castor sugar in this bowl. So इसमें हमारे पास castor sugar है half cup. In this I am going to add 1/4 cup of brown sugar. इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 cup brown sugar. And in this I am going to add half cup of salted butter, which is softened at room temperature. आधा कप में यहाँ पे मक्खन ऐड करूंगी, नमक वाला नॉर्मल अमूल बटर. और ये जो बटर है सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. Yes, Shagufa, for your question, you are supposed to, अगर आप egg use कर रहे हो तो yes, पूरा 1 egg पड़ेगा. And ladies, please don't worry, ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे measurements हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी. एंड जो PDF है वो पंखुरी ऐप के ऊपर अपडेटेड है, आप वहां पे जा करके ले सकते हैं. So we are going to beat the butter and both the sugars until it's light and fluffy. So हम जो sugars हैं हमारी दोनों और जो मक्खन है उसको बीट करने वाले हैं जब तक sugar अच्छे से combine हो जाए और butter का कलर थोड़ा सा light हो जाए और ये पूरा हमारा जो mix है वो थोड़ा fluffy हो जाए. So here you can see we are mixing our castor sugar, brown sugar and our amul butter together. You're going to mix it until everything gets incorporated well and the butter color changes to a little light pale yellow kind of color. So you're going to mix it until then. And remember, ladies, if you have any questions related to the session, please feel free to put it in the comment section and we'll be more than happy to help you. कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हम वहां पे उनको आंसर कर देंगे. So this you have to do in one direction only and on full speed. This is called creaming method. Can you translate, Saloni, please? Yeah, sure. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जो पूरा का पूरा ये मिक्स कर रहे हैं कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, आप दूसरी डायरेक्शन में मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में मिक्स करिए और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रीमिंग मेथड. So the process that we are using here is called as creaming method, and in this method you are supposed to mix your batter only in one direction.
So until this is happening, I will quickly repeat कि हमने अभी तक क्या किया है. हम लोगों ने अभी तक 3 टेबल स्पून हम लोग ने फ्लैक्स सीड लिया था, उसको 1 टेबल स्पून में मिक्स किया, मतलब मिक्स नहीं किया, 1 टेबल स्पून में हम लोगों ने साइड में रख दिया. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैस्टर शुगर ली, ब्राउन शुगर लिया और बटर लिया, और इन सब को हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं. जब आप मिक्स करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ये मिक्सर है इसकी स्पीड फुल होनी चाहिए, एंड आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे. ओके, एंड कब तक मिक्स करना है? तब तक मिक्स करना है जब तक सब कुछ एक साथ मिक्स ना हो जाए एंड आपके बटर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ना हो जाए. ओके. Okay, so moving forward, we will add the flaxseed egg which we have made. This is called flaxseed egg. So इसको जो बोलते हैं flaxseed egg बोलते हैं कुकीज में. जनरली आप 1 एग के साथ रिप्लेस कर सकते हो अगर एगलेस बनाना चाहते हो, अगर आपके पास एग रेसिपी है, और इसकी जगह आप 1 एग भी ले सकते हो. So this is called flex egg. In other recipe, if you want to use anything alternative instead of egg, so this replace 1 egg. And instead of this also, you can take 1 egg in this recipe. So this I'm going to add. And the next thing I will add is vanilla essence. तो जो फ्लेक्स एग हमने पहले बना के रखा था वो मैंने ऐड किया, और यहाँ पे मैंने ऐड किया वनीला एसेंस. We'll just give a slight mix. So you can see here, हम लोगों ने जो flaxseed रखा था, the flaxseed that we had kept aside, we have mixed that in it, and we have added some little bit of vanilla essence. And now we're just If you will mixing it use together. egg, in case if you use egg, you will beat it for a minute with the help of a beater. अगर आप egg use करते हैं तो 1 मिनट के लिए आप beater से उसको mix करेंगे. So Kamalpreet, there are a few questions here. Can we take them, Abhi? Okay. I think we have to keep it in the fridge, Saloni. Can we take the questions at that time? Yeah. That will be save our time. हाँ. Okay, we'll do it like that. Okay, so next we are going to sieve the flour, baking powder, baking soda and salt. So next हम इसमें मैदा डालेंगे छान के, उसके ऊपर डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक. So the quantity of flour is 1.5 cups. मैदे की क्वांटिटी है 1 और आधा कप. So next you can see here, now we are going to add our dry ingredients. That means we are going to add our all-purpose flour or maida, baking soda, baking powder, and we are going to add, what was one more thing? Salt. Salt. Yes, we are going to add salt. So the maida or the all-purpose flour is 1 plus half cup. Okay, 1 plus आधा कप, यानी कि 1.5 कप आपको ऐड करना है अपना मैदा. Oh, I really like the siever. इससे कुछ भी बाहर नहीं गिरेगा. Yes, this is quite nice. I have two like this. It's a nice one. I guess ये हम सबको खरीद लेना चाहिए. अगर आप स्पेशली ऐसे बेक वेक करते हैं तो कहीं बाहर नहीं गिरेगा, मम्मी से डांट भी कम पड़ेगी. Actually, this is broken. This generally have a handle which you just do like this, and it will go on itself. आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है. Okay, I have seen this. So you must have seen I have added thrice because I am using half cup. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने 3 बार यहाँ डाला है क्योंकि मैं हाफ कप यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा.
which is 1/4 TSP each. So next हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आप देख सकते हैं विकफील्ड का है. आप इसके भी यूज कर सकते हैं, किसी और ब्रांड का चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं. और इनकी क्वांटिटी जो होगी वो होगी 1/4 टीस्पून. ओके, कितनी होगी? 1/4 टीस्पून. दोनों की, दोनों सेम क्वांटिटी में डलने वाले हैं. ओके, 1/4 टीस्पून. And lastly, we will add salt, that is also 1/4 TSP. Okay, so here you can see we have mixed all our dry ingredients. सारे के सारे dry ingredients हम लोगों ने साथ में mix कर दिए हैं. क्या क्या था dry ingredients में? We had all purpose flour और मैदा, जो कि था हमारा 1 + ½ cup. उसके बाद we added baking soda and baking powder. Both were 1/4 teaspoon. Remember, it is 1/4 teaspoon. And सबसे लास्ट में we added salt या नमक, जो कि था हमारा 1/4 टीस्पून. ये भी ओके. बहुत ही सिंपल सा आपका मेजरमेंट है. इन सबको साथ में डाल के यू आर जस्ट गोइंग टू मिक्स इट. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कट एंड फोल्ड मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, कट एंड फोल्ड मेथड बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे एक फुल राउंड लोगे एंड देन बीच से अपने बैटर को कट कर दो. सो यू टेक अ फुल राउंड, कट इट फ्रॉम द सेंटर. सो इसे कहते हैं हम कट एंड फोल्ड मेथड. ओके, बेसिकली इससे आपका जो बैटर बनता है वो काफी अच्छा एंड फ्लफी सा बनता है. नॉट लाइक फ्लफी बट लाइक अच्छा बनता है. जब भी आप एग या फिर एग जैसी कोई चीज डालते हो तो ये मेथड यूज करना ज्यादा अच्छा होता है. Also, Kamalpreet, I guess you're on mute if you're speaking something. No, I was not speaking anything. अच्छा अच्छा, ओके. सो कमलप्रीत, इसका जो वो रहेगा वो बिल्कुल डो जैसा हमारा बनेगा या फिर? हाँ बिल्कुल डो जैसा हार्ड बनेगा. Can you ओके. see? Because we have to shape it ना, हमें shape करना है तो soft dough बनेगा. This would be a soft dough. ओके, बस ऐसा डो जैसे कि जब आप आटा मारना सीखते हो और उसमें थोड़ा सा गीला हो जाता है, वैसा डो. Somewhat like that, yes. Yes. So yes ladies, I hope अभी तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी. जो अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम लोग को इनको ना डो को फ्रिज में रखना होगा, तो हम उस टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस ले लेंगे. But till then, if you have any more questions, please feel free to put them here so that we can help you out and we could answer most of the questions here. So you can see these are marshmallows. बहुत ही easily आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाते हैं, Amazon पे भी मिल जाते हैं. Okay, Kamalpreet, you're on mute actually. Okay, so these marshmallows are available in veg and non-veg. So if you're not comfortable with the non-veg ones, you can always buy the veg ones, which is available on Amazon. अगर आप non-veg के साथ comfortable नहीं है marshmallows के साथ, तो veg marshmallows भी मिलते हैं. Amazon पे easily मिल जाते हैं. Okay, and if you're using big size of marshmallows, cut that into 6 pieces or use mini marshmallows 20 pieces. तो अगर आप बड़े वाले मार्शमेलोज यूज कर रहे हैं तो उसको 6 पीसेस में कट कर लीजिए, या तो आप छोटे मार्शमेलोज मिनी मार्शमेलोज 20 पीसेस यूज कीजिए. सो आई एम गोइंग टू ऐड हियर. So you can see here हमारे ये marshmallows हैं, हम इनको ऐड करें हमारे डो में. And remember, if you're using the bigger ones, cut them into 6 parts. Otherwise, try using the smaller ones itself.
and you can use around 20 marshmallows in it. You can go for either the veg version or even for the non-veg version, whichever you're comfortable with. And next, we are going to add chocolate chips in it, or you can add chocolate chunks. So next हम इसमें add कर रहे हैं chocolate chips. So this generally we have to add around half cup, but you can do extra also if you want. So जो chocolate chips हैं हमें डालने हैं around 1/3 cup, sorry. But अगर आप ज्यादा डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से तो ज्यादा भी डाल सकते हैं. So this I'm going to form into a dough. तो इससे मैं एक डो को मिक्स कर दूंगी. So here we are just mixing it all together, and after the marshmallow, you can see we have also added chocolate chips here. You can either add 1/3 cup of chocolate chip, or if you're somebody like me who eats a lot of chocolate, then just go with it. Add as much amount of chocolate chip you want to, and then just knead them. Not like knead them together, just like combine them together. Don't knead them. And now we are going to just keep it in the fridge. Basically, you have to keep it for around 1 hour, but it's totally fine. I'm going to keep it for around 10 minutes. But if you will give it proper time, it will spread nicely. तो इसको आप अराउंड 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे. मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, बट अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे ना तो इनका स्प्रेड बहुत अच्छा आएगा. Yes, now we can take the questions. Okay. So we have questions here. So the very first question is that, ma'am, if we do not have brown sugar, is there any other thing that we can use? See, brown sugar gives you crunchiness, chewiness and color. So if you can use, that would be good. If not, use the same amount of castor sugar, but it is going to affect the texture. So brown sugar जो होती है, just 1 second. ब्राउन शुगर जो होती है वो कलर भी देती है और एक च्यूइनेस भी देती है, बट अगर आप नहीं है इमरजेंसी केसेस में उसकी जगह आप पूरी कंप्लीट कैस्टर शुगर डाल सकते हो. जितना ब्राउन शुगर का अमाउंट है वो भी, और जो कैस्टर शुगर का वो तो है ही, बट आपके टेक्सचर में फर्क आएगा. इस चीज का ध्यान रखना. Okay, so there's a question that, ma'am, we have to grind the brown sugar and we have to grind the brown sugar and use it, or can we use no, normal. Okay. Just the way it is. Okay. And okay, so there's this another question. Can we use the powdered sugar instead of the castor sugar? See, castor sugar gives you aeration. In the creaming method, aeration is basically formed. That's why it turns out to be light and fluffy. If you will use powder sugar, you will not get aeration and texture will be affected. But you can try. अगर आप castor sugar नहीं use करोगे, powder sugar use करोगे, तो aeration proper नहीं बनेगी, cookies इतनी soft नहीं बनेंगी, fluffy नहीं बनेंगी, but आप try कर सकते. Okay. So there's a question. Ma'am, what is the shelf life of these cookies? Shelf life, these would be good for around 1 week in airtight container. ये जो cookies हैं around 1 हफ्ते तक airtight container में ठीक रहेंगी. Okay. On room temperature. Okay. There's a question. Can I use Desi khand instead of brown sugar? No. Okay. In this recipe, no. Okay. So yes, I guess these were all the questions. Ladies, if you have any more questions, please feel free to put them here. Yes, please. कोई भी questions है, अभी हमारे पास time है, फटाफट पूछ लीजिए. Yes, क्योंकि उसके बाद आपको फिर बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए. हाँ, क्योंकि इसके बाद फिर हम बेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम बेकिंग के सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आप इजीली अभी पूछ सकते हैं. Okay, so there's a question that what taste does flax seeds have in these cookies? It will not affect the taste much. Flax seed का कोई taste effect नहीं करता, but थोड़ा सा आपको मे भी हो सकता है दिखे black spots बीच में, बस taste में कोई effect नहीं आता. It does not affect the taste, just you can see some black spots in between, only that. Otherwise, no taste difference.
ओके एंड अगर कमलप्रीत कभी हम लोग को मतलब फ्लेक्स सीड्स नहीं मिल रहे हैं तो कैन वी जस्ट टेक पाउडर नहीं मिला तो वी कैन जस्ट टेक द फ्लेक्स सीड्स एंड पाउडर देम एंड जस्ट यूज Yeah, देम. yeah, I do that only. See, these are the flexi that I have powdered them. Oh, okay, okay. You have to do that only. Flaxseed powder is not easily available, so you have to powder the flaxseed at home only. So flaxseed का powder easily नहीं मिलता, तो घर में आप flaxseed market से लाके घर में बस उनको grind करके powder बना लीजिए, कोई problem नहीं है. Okay. So there's a question. Kinu, for your question, yes, you can get the recordings, and the recordings will be available on the Pankhuri app. The link of the app is given in the description box. You can check there. If in case you haven't registered for the course, the registration link is also given in the description box. You can register for free and you can go and watch the recordings. Okay. You will also get the certificates, PDF, and product list there on the app itself. Okay, so there's a question that ma'am, half cup of butter is equal to how many grams? Okay, okay, sure, sure. Kamalpreet, you're still on mute. Okay. There is a small sweet lover in my house, so she could not resist when she saw the packet of marshmallows. So I was Okay. just handling her. Okay. Hanji. Okay. Yeah. So there's a question that what is half cup of butter is equals to how many grams? Okay, in the Pankhuri group, Saloni, I will post the conversion chart. एक अच्छा, कन्वर्जन okay. चार्ट होता है. अगर आप लोग रेगुलर मेरी क्लासेस लेते हैं तो आपके पास पक्का होगा, बट जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए मैं पंखुड़ी का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कन्वर्जन चार्ट पोस्ट कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले लेना. Yes. So वही ऐप के ऊपर जो ग्रुप होता है वहीं पे you'll find, मतलब अगर आप ऐप के ऊपर जाओगे तो वहां पे एक ग्रुप का ऑप्शन होता है, नॉट द व्हाट्सएप ग्रुप बट द ग्रुप जो कि ऐप पे इटसेल्फ रहता है. आप उसमें जाकर के कोर्स ग्रुप के नाम से उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो. वहां पे कमलप्रीत डाल देंगी कन्वर्जन चार्ट. यू कैन जस्ट चेक कि वहां पे कितने ग्राम्स होते हैं. ओके, राइट. सो इवन फॉर अदर थिंग्स यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट. और भी कोई चीज आपको कन्वर्ट करनी हो तो उसमें आपको कन्वर्जन चार्ट में हेल्प मिल जाएगी. okay. Yes, Sanya, absolutely correct. If you check the recording, you have mentioned कि वहां पे अगर आप चाहें तो एग ऐड कर सकते हैं एंड you'll यूज, मतलब जितने भी हम कुकीज बना रहे हैं उसके लिए you will use around 1 egg. Okay. Okay. So do we have any more questions, ladies? If not, we will start with the cookies now. I don't think we have any questions अभी. अभी तो सारे questions हो गए हैं. Okay, Let's start one, with the yeah, cookies then. yeah, one very important thing. Like in the starting, I have given the introduction that graham crackers are used, and in centers you have marshmallow, soft burnt marshmallow. So in these cookies also, if you want to enhance the flavor, you can add some not completely fine powder, but tidbits of graham crackers. You can just crush it randomly with your hand and you can put in the batter, the graham crackers. Okay, ग्राहम क्रैकर्स आते हैं, गूगल पे चेक कर लेना. अगर आपको बिल्कुल वैसा टेक्सचर चाहिए ना जैसा कैंप फायर ट्रीट जो मैं आपको स्मॉल्स बता रही हूँ, तो एक ग्राहम क्रैकर्स आते हैं, उनको हाथ से रैंडमली क्रश करके वो भी डाल सकते हो. उसके बाद टेस्ट और एनहांस हो जाता है. इवन दैट टेस्ट वेरी नाइस. If you want to do experiment, you want to taste both of them, you can try both the variations. ओके, सो कमलप्रीत, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं बैटर, इसमें हम ऑलमोस्ट कितने कुकीज बना लेंगे? इसमें अराउंड 12 कुकीज बनेगी, 40 to 45 ग्राम्स की एक. ओके ओके. So this batter will give you around 12 cookies, each of 40 to 45 grams. Okay. So what will we do? Either you can just do it with your hands, which is option one, and which is easy.
or you can take a ice cream scooper. You can take a ice cream scooper, scoop out the dough with that, and put it on the tray. And just flatten it up a little. तो या तो आप हाथों से ले लीजिए और इसका एक रोल बना के थोड़ा सा इसको फ्लैट करके यहाँ पे रख दीजिए. ओके, या तो आप ऐसे एक स्कूपर से, आइसक्रीम स्कूपर से इसको स्कूप आउट करके मैट पे रखेंगे. हल्का सा इसको आप दबाएंगे. ओके, और इसको यहीं पे छोड़ देंगे. And in between you have to do at least 3 fingers gap. So cookies के बीच में आप at least 3 fingers का gap रखेंगे. तो you can see हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कुकीज बना रहे हैं. कुकीज हमारी सारी इक्वल साइज की बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्कूपर लेंगे. आप भी कोई स्कूपर ले सकते हो, या फिर आप मे बी आपका जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना, जो छोटे वाले, आप वो भी यूज कर सकते हो. इससे आपके जो कुकीज होंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे. सो आप उनको लेकर के, और you, yeah, yes, yeah, complete Saloni, you complete. ओके, सो आप उनको लेकर के इजीली आपका जो बेकिंग शीट होगा या बेकिंग ट्रे होगा उसके ऊपर आप रखिए, और उनके बीच में याद रखिएगा आपको एटलीस्ट 3 फिंगर्स के डिस्टेंस रखना है. क्यों? क्योंकि आपके जो ये कुकीज हैं वो एक्सपैंड करेंगे. अगर आप नहीं रखोगे डिस्टेंस, पूरा का पूरा एक साथ मर्ज होकर के एक बड़ा सा मतलब वैसा प्लेट जैसा बन जाएगा. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू कीप एटलीस्ट 3 फिंगर्स का डिस्टेंस बिटवीन देम. यस कमलप्रीत. And you can also use a measuring scale to just measure each cookie of 40 to 45 grams. अगर आपको even cookies चाहिए ना, तो आप measuring scale भी यूज कर सकते हो. 40 से 45 ग्राम की एक आप उसमें कुकी का डो मेजर करके उसको शेप करके फिर ट्रे पे रख सकते हो. So yes, Gauri, don't worry. We are going to make it in the OTG only, but we will try to tell you ki how you can make it in microwave also. Right, Kamalpreet? Yes. Okay. Also, Sanyam, for your question, I'm really sorry, I just read it wrong. So yes, in this we haven't used any kind of egg. Instead of egg, we have used flaxseed powder along with water. So we have taken 3 tablespoons of flaxseed, added it in one table. Sorry, we took one. Take it. Just a sec. Yes, so we took 1 tablespoon of flaxseed powder and we added it with 3 tablespoons of water. Okay, and we used it instead of our egg. Okay, so I am using silicone sheets in my baking trays, but if you don't have silicone sheet, you can also use butter paper or parchment paper. For parchment paper, you will apply oil on this area, put the butter paper or parchment paper and grease the butter paper and parchment paper also with oil. So मैं यहाँ पे तो silicone sheet ले रही हूँ, इसमें से तो cookies आराम से निकल के आ जाएंगी. But अगर आप butter paper या parchment paper लेते हो तो पहले इस एरिया पे आप oil लगाओगे, उसके बाद बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रखोगे और उसके ऊपर भी लाइटली ऑयल लगा के उसके ऊपर आप कुकीज रखना स्टार्ट करोगे. Okay, so here you can see we are using a silicone sheet here. In case you do not have any silicone sheet, that's absolutely fine. You can go for butter paper or parchment paper, and you can just oil it or butter it on both the sides and then put your cookies over it.
ओके ओके सुगंधा जी, आई होप आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा. श्योर सुष्मिता, आई विल वंस ओरली रिपीट जो हम लोग ने जो भी कुछ किया है सबसे एंड में. एंड अगर आप चाहे तो आप पंखुरी ऐप के ऊपर जाकर के रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं. आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी रात तक पंखुरी ऐप के ऊपर, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जा करके फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. वहाँ पे आपको फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगी, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, एंड प्लस ग्रुप भी मिल जाएगा जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड वी विल आंसर दोस क्वेश्चंस देयर. ओके. So there's this one question here, Kamalpreet, that what is the difference Yes. between parchment paper and butter paper? Butter paper is more greasy, parchment paper is not as greasy. बटर पेपर जो होता है वो ज्यादा ग्रीजी होता है, पार्चमेंट पेपर इतना ग्रीजी नहीं होता. ओके, श्योर सुगंधा जी, आप जरूर चेक करिएगा. एंड यस लेडीज, वी होप कि आप ये सारी की सारी जो हम आज कुकीज आपको बनाना सिखा रहे हैं, आप ये कुकीज बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे. एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू आर गोइंग टू शेयर द पिक्चर्स विद अस, और आप ऐप के ऊपर शेयर कर सकते हो, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू नो. कमलप्रीत, आप एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिएगा. हाँ जी, sugar.maniacs. So I am going to keep this in a preheated oven, which is at 180 degrees Celsius, upper rod on, lower rod on, fan also on. So मैं इसको preheated oven में रखने वाली हूँ, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पे preheated है, और ऊपर की रॉड ऑन है, नीचे की रॉड ऑन है, फैन भी ऑन है, और प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए. द प्रीहीटिंग टाइम वुड बी 10 minutes. And the cookies will go on the middle rack. Cookies आपकी हमेशा जाती हैं middle rack में. I don't prefer keeping 2 trays at once. I prefer to bake one at a time. That give you better results. So मैं prefer नहीं करती कि आप 2 trays एक साथ रखिए, एक एक करके ट्रे बेक कीजिए, उससे रिजल्ट बेटर आते हैं. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन पुट 2 trays ऑल्सो. अगर आपको बनानी है, जल्दी बनानी है, तो 2 ट्रे भी एक साथ रख सकते हो. Yes, we can take the questions now. Okay, Okay. sure. I'll explain the microwave method also. For microwave method, you will select convection mode, set the temperature at 180 degrees Celsius, preheat for 5 minutes, or if it is automatic, let it preheat on its own. Put the cookies on a butter paper or on a silicone sheet over a microwave safe plate, and you can bake this for around 12 to 14 minutes in microwave. Okay. माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करना है, 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है. जस्ट 1 सेकेंड. और उसके बाद आपको प्रीहीट करना है 5 मिनट के लिए. अगर प्रीहीटिंग ऑटोमेटिक है तो इसको अपने आप होने देना, और उसके बाद आप एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में बटर पेपर लगा के या सिलिकॉन शीट लगा के उसके ऊपर कुकी सेट करके 12 से 14 मिनट के लिए बेक करोगे. ओके. फॉर ओवन द टाइम वुड बी 14 to 16 minutes. ओटीजी के लिए टाइम रहेगा 14 से 16 मिनट. ओके. Okay. Okay, so there is Sushmita ma'am here, and she's saying कि उनकी जो आपने जो उनको सिखाया था almond and oat cookies, they are her highest selling products. आई एम सो ग्लैड. इतना अच्छा लगता है ना जब आप ये चीजें मुझे बताते हो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ ग्रो करने में. मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है. I guess it's a very good thing कि मतलब आपने सीखा है. Now you have your own business. Exactly. And you're selling it. Exactly. It's such a good thing. Yes, and I really, Saloni, I really feel proud when they come to me and tell me that it is my success stories and all that. So it makes me very proud. बहुत ही Yes, ज्यादा it प्राउड is. फील होता है अपने आप पे भी और आप लोगों पे भी. आप लोगों पे ज्यादा होता है एक्चुअली.
बिल्कुल। सो यस लेडी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप ये जो जितनी चीजें हैं ना हम लोग बता रहे हैं, आप इनको बनाना सीखिए एंड मेक देम। ये सारे के सारे जो हमारे सेशंस होते हैं ये होती इसलिए है कि आप ये सारी चीजें सीख सकें एंड आप जो आप एग्जैक्टली हमेशा करना चाहते हो ना वो कर सको आप। एग्जैक्टली। आप लोगों को अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। मैंने जापानीज कंपनीज में जॉब करी है, ट्रेडिंग फील्ड में थी मैं। शादी के बाद मैंने बेकिंग का कोर्स किया है। इंटरेस्ट था, शुरू से था। पहले एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया और शादी के बाद, इनफैक्ट बेबी के बाद, जब मेरी बेबी 8 मंथ्स की थी, उसके बाद मैंने कोर्स करा है, प्रोफेशनल कोर्स। और उसके बाद मैंने बेकिंग करनी शुरू करी है। तो अगर कोई मेरी स्टोरी से इंस्पायर हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एज क्या है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहो तो किसी लेवल पे भी, किसी तरीके से भी काम शुरू कर सकते हो। राइट सलोनी? यस ऑफ कोर्स, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे तो मतलब जो भी आप सीखना चाहो, वी आर ट्राइंग टू गेट more and more courses, we are trying to get एग्जैक्टली more and more एग्जैक्टली trainers. So just एग्जैक्टली find your interest, we'll help you, we'll get the course that you want, and just become somebody really independent. You'll be very proud of yourself. एग्जैक्टली। और हम चाहते हैं हमारी ऐप इंडिया की सारी वुमेन्स तक पहुंचे। जो भी आपका इंटरेस्ट है, हमारी ऐप पे अगर आप देखोगे, पंखुड़ी ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि बेकिंग का है या लिमिटेड है, बहुत सारे कोर्स हैं। तो कोई भी वुमेन जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने लिए एक पर्सनल थोड़ी सी साइड इनकम अर्न करना चाहती है, वो यहाँ से लर्न करके कुछ भी उसको परस्यू कर सकती है, उसको बिजनेस कर सकती है। हॉबी के लिए भी आप सीख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए करना है। अगर आपको हॉबी इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप सीख सकते हो। और हो सकता है कि पंखुड़ी ऐप से आप ग्रो कर जाओ, जैसे आप सुन ही रहे हो, सुष्मिता जी ने अभी शेयर किया। Yes, exactly. So just try all these चीजें जो भी हैं, ट्राई करिए, आप एक बार चेक करिए। क्या पता आपको कोई ऐसी चीज हो जो बहुत बहुत टाइम से मन था सीखने का, आपको समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है आपको हमारे पास मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आप हमें बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए वो एक कोर्स ले आए, एग्जैक्टली। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, सीखना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सो जस्ट गो फॉर इट। ओके, यस। so there are few more questions here. Let's get back to श्योर। the questions. Okay, so there's this one question that, ma'am, why is it like your cookies get soft after a day, even if I store them in an airtight container? Then what you can do, you can just bake it again for 2 to 3 minutes. It is soft because once you take it out from the oven, it is soft. But after that, after some time when it's cooled down, you get to know whether it's turning crunchy or not, whether it is soft. So what you can do, if you don't feel satisfied with that, with the texture, you can just keep it again in a preheated oven for 2 to 3 minutes so that it turns crunchy. ओके, अगर आपको सॉफ्ट कुकीज मिलती हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद पता लगता है। अवन से निकालोगे तो उस टाइम तो सॉफ्ट ही होंगी। अवन से निकालने के बाद, ठंडी होने के बाद पता लगती है कि क्रिस्पी है कि नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो ठंडी होने के बाद अगर आपको लगता है अभी भी सॉफ्ट है, तो उनको आप प्री हीटेड अवन में 2 से 3 मिनट लिए और बेक होने दीजिए, वो क्रिस्पी हो जाएगी। ओके, एंड देन वंस यू satisfied with the crispiness level, then store it in a airtight container. And you have to store it on room temperature. Some people store it in fridge, which is not right. आपको ये कुकीज जो है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करनी होती है, फ्रिज में नहीं स्टोर करनी होती। कुछ कुकीज होती है जो फ्रिज में स्टोर होती है, तो वही स्पेसिफिकली कुकीज को स्टोर में डालिए, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे। ओके। Yes, okay. So there's this one question that, okay, I'll answer this. Okay, Kinu, for your question, yes, we do have courses जहाँ पे आप different different flavors की कुछ cookies सीख सकते हैं. इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही कमलप्रीत का एक सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने 10 different type of cookies सिखाई थी. सो अगर आप राइट। चाहें तो आपको उस कोर्स की फुल रिकॉर्डिंग मिल सकती है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको आप बस मैसेज कर सकते हो कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी एंड देन आप उसके लिए जा सकते हो। ओके ओके, जस्ट अ सेक। ओके, सो आई गेस इतने क्वेश्चन थे, बाकी तो एवरीबडी रियली लव्स यू कमलप्रीत, सबको
बहुत ही पसंद है। हाँ, बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स Thank you मिले। so much. Thank you. Seriously, thank you so much. So, okay. So yes, ladies, if you have any more questions, please let us know. तब तक हमारी cookies bake हो रही हैं. If you have any more ideas or suggestions that you want कि हम लोग आए उस चीज के साथ, तो let us know about that also. And इतने प्यारे कमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो यार, हमें अच्छा लगता है, सिर्फ बाद में आकर के हम लोग पढ़ते हैं. So just put them there also. और प्ले स्टोर पे जाके वहां पे भी ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स डालो हमारे लिए और रेटिंग भी दो. हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, पता है. आपके रिव्यूज आप से बाकी लेडीज को हेल्प मिलती है कि ऐप कैसी है, तो देख के वो जज कर सकती हैं और डाउनलोड करके वो भी सीख सकती है. yes. Okay, so there's this one question that, ma'am, can we bake these cookies on gas also? Okay, gas, yes. Okay, gas, not so sure, but I will show you a setup you can try. Okay? मेरे को देना. Okay, sure. मैंने एक बार गैस पे कुकीज बनाई है, वैसे सही बन जाती है उस पे, बस थोड़ा सा टाइम लगता है. बाकी गैस पे भी वो बन जाती है. I think you tried chocolate chip cookies, right? Yes, I did. I tried chocolate chip cookies. बन गया You था. told me. Yes. Just 1 second. So yes, ladies, अभी तक बेकिंग वाली चीज क्लियर हो गई ना, कि आपको ओवन में कैसे करना है, माइक्रोवेव में कैसे करना है. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब हम गैस वाला देख लेते हैं कि कैसे करना होता है. Okay, so on gas, you will take a kadhai. You can take a cooker also, but I don't recommend cooker. Who takes my regular class must know this. कि मैं cooker recommend नहीं करती हूँ. Why I don't recommend cooker? Because when you put something or when you take out something, this things can burn. मेरी कल ही जली है fresh. तो अब तो मैं बिल्कुल बोलूंगी cooker मत use करना, ठीक है? And this you will keep a lid on and you will put it on gas on low flame and this will preheat like this. So ऐसे आप सेटअप बना के कढ़ाई के ऊपर एक लिड लगा के इसको आप गैस पे रखोगे और लो फ्लेम पे आप पहले इसको खाली प्रीहीट होने दोगे. Okay, if you don't have a lid like this, you can keep a plate also which close the mouth completely. अगर आपके पास ऐसी lid नहीं है तो आप एक प्लेट भी रख सकते हो जो पूरा इसको बंद कर दे. Okay, once it is done, you will take a steel katori or you will take a wire rack stand. Do you all know the stand on which we keep hot utensils? सबको और एक वायर रैक आता है, वो पता है? So yes, ladies, I guess आप लोग को Just पता one होगा, वो second for छोटा me. सा ऐसा, या श्योर, छोटा सा एक ऐसा स्टैंड जैसा होता है जिसको मतलब आप ऐसे अपने काउंटर पे रखते हैं, एंड देन उसके ऊपर कोई भी जैसे गर्म चीज होती है आप उसके ऊपर रख देते हो. सो वो छोटा सा जो स्टैंड होता है ना, वही स्टैंड होता है. आप उसको इस कढ़ाई के अंदर रखोगे. जब आपका कढ़ाई प्रीहीट हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर आप रख दोगे अपना जो भी कुकी का प्लेट या जिसमें भी आप बना रहे हो कुकीज, वो रख दोगे आप. ओके, एंड देन वापस से ढक्कन लगा के एंड देन उसको आप बेक कर लोगे. सो दिस इज हाउ यू बेक योर कुकीज इन द गैस. ओके, सो प्री हीटिंग का टाइम जो होता है वो जनरली 7 to 10 मिनट्स होता है, एंड बेकिंग के लिए अराउंड 15 to 16 मिनट्स लगते हैं आपका कढ़ाई पे बेक होने में. यस प्राची, हम वही बता रहे थे कि आप कैसे कढ़ाई मतलब गैस पे कैसे आप बेक कर सकते हो. सो ये जो गैस वाला सेटअप है ना, दिस बेसिकली इज फॉर द सॉरी, ये कढ़ाई वाला जो सेटअप है, दिस इज फॉर द गैस गैस पर्पसेस ओनली. ओके, Okay, so one thing quickly I will tell you. You will take, once your cookies are out of the oven, you will take a glass which is little bigger than the size of your cookies and you will swirl it like this. What happens with this? The cookies become round.
सो आप एक ग्लास लोगे जनरली जिसका जो माउथ है वो कुकीज से बड़ा होगा. कुकीज पे ऐसे रख के आप एक बार इसको ऐसे घुमाओगे. इससे क्या होगा, आपकी कुकीज ना अगर फैली हुई है ज्यादा तो वो गोल हो जाएंगी. Oh, this is such a good trick. ये सही है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दिस. कितना सही, ऐसे मस्त ऐसा राउंड राउंड कुकीज रहेंगी मेरी सारी. फर्क लग रहा है. यस. And to give it some wrinkle, you will tap it a little. You will get some wrinkles on the cookies if you need. So आप इसको टैप करोगे गरम गरम को तो आपको थोड़े से wrinkles भी मिल जाएंगे कुकीज में. कुछ लोगों को wrinkles अच्छे लगते हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हो. ओके. सच्ची आपकी कुकीज बिल्कुल राउंड हो गई हैं. लेडीज, यू लेट अस नो, डोंट यू फील कि वो एकदम मस्त ऐसा राउंड हो गई है. मेरी कुकीज जनरली थोड़ी सी इधर उधर फैल जाती हैं. एंड आई ये ऑलवेज वाली यूज्ड टू कुकीज तो थिंक कि ऐसे कैसे. बैटर से जो भी आप बनाओगे वो फैलेंगी ऐसे. राउंड नहीं होती वो, कभी भी नहीं होती. भाई, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ऐसे सबका राउंड राउंड बनता, मेरा कैसे फैल रहा है. नाउ आई विल ट्राई दिस. Okay, and this tray, why I don't prefer keeping two trays, because when the tray is on the upper part, the marshmallows get a little more burnt. Although this is totally fine, s'mores are just like this only, but it does not look presentable, the more dark brown color, especially on the colored marshmallows. So ऊपर हम दो ट्रे क्यों नहीं रखते साथ में, इसीलिए कि मार्शमेलोज जो ऊपर ट्रे होती है ना उसके मार्शमेलोज ज्यादा ब्राउन हो जाते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप बिल्कुल खा सकते हो, कर सकते हो. जो मैंने आपको बताया कैंप फायर में बर्न करते हैं वो ऐसा ही आता है टेक्सचर, बट देखने में प्रेजेंटेबल नहीं लगता. बस इतनी ही प्रॉब्लम है. ओके, सो बता दीजिए फटाफट कुकीज कैसी लग रही है, फिर मैं आपको गैस मेथड भी बता दूंगी फटाफट. So first, quickly tell me how are the cookies looking. Then I will tell you about the gas method also. मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है, स्पेशली वो जो कलर्ड मार्शमेलो की वजह से वो ग्रीन एंड पिंक आया ना, दैट लुक्स वेरी नाइस. Okay, this is quite hot. I will let it cool down first, then I will take them because they are quite delicate. तो पहले इनको मैं ठंडा होने दूंगी फिर निकालूंगी. अभी बहुत ही delicate है. Okay, so yes, are we getting the comments, Saloni? Yes. Everybody is saying that it's very nice and it's very beautiful and they look very awesome. You can also add white chocolate chips, dark milk. You can mix all the chocolate chips and add. And you can take different color of marshmallows. That gives a very beautiful look to these cookies. आप जो तीनों टाइप के चॉकलेट चिप्स आते हैं, व्हाइट, मिल्क और डार्क, तीनों मिक्स करके डाल सकते हैं और कलरफुल डिफरेंट कलर के मार्शमेलोज डाल सकते हैं. उससे जो कुकीज की लुक आती है ना वो बहुत अच्छी आती है. ओके, सो हम गैस मेथड पे थे, ये मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ. सो वायर रैक आप सबको समझ आ गया ना? आई थिंक सलोनी यू हैव डन दैट पार्ट. या मैंने पूरा बता दिया था, आप एक बार बता दो. So that wire stand you will keep, and on that top of that you will keep a plate which fits in your kadhai. Obviously, this plate should be lined with parchment paper or butter paper, and on top of this you will keep your cookies. तो जो भी आप इसमें प्लेट रखोगे वो बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से लाइन होनी चाहिए और उसके ऊपर आप कुकीज रखोगे. ये प्लेट रखोगे आप स्टैंड के ऊपर. जनरली इट शुड बी लिटिल अप फ्रॉम द बेस, दैट्स व्हाई वी यूज स्टैंड. जो बेस से है थोड़ी ऊपर होनी चाहिए ये प्लेट, इसीलिए हम स्टैंड यूज करते हैं. You will cover it with a lid and bake these cookies on low flame for about 14 to 15 minutes. आप प्लेट रख के लिड से कवर करके कुकीज को बेक करोगे लो फ्लेम पे 14 से 15 मिनट के लिए. ओके, एवरीथिंग क्लियर? गैस का समझ आया? यस, गैस मेथड क्लियर? Yes, I guess ladies, let us know if the gas method is clear, but I guess clear हो गया होगा. And also, Kamalpreet, there were few questions. So, Yes. yeah.
So there's a question that, ma'am, which type of brown sugar have you used? Was it a big granulated ones or the fine ones? No, big granulated ones. Okay. So there's a question that, ma'am, whenever I use white chocolate chip in my cookies, they always burn. Why is it so? That's totally fine. What you can do when the cookies are out, as I told you, when it is out from the oven, they are soft. They will turn a little stiff or crunchier when it will cool down. So when it is soft, you can just press in the white chocolate chips. It will remain very much white and your cookies will look very amazing. So जब भी आप white chocolate chips डालना चाहते हो पहले मत डालो. जैसे ही अवन से कुकीज बाहर आती हैं उस टाइम तक सॉफ्ट होती है, ठंडी होने के बाद थोड़ी स्टिफ या क्रंची होती हैं. सो जैसे ही अवन से बाहर आई तब उसके ऊपर एक एक चॉकलेट चिप प्रेस कर दो. बट डू दिस वेरी केयरफुली, जस्ट बी केयरफुल योर हैंड्स डोंट बर्न. करोगे बहुत आराम से करना, ध्यान रखना कि हाथ ना जले. So with this, your cookies, your chocolate chips will look very much white, and the cookies will look very nice. बहुत white लगेंगे chocolate chips क्योंकि वो burn ही नहीं हुए, और cookies भी बहुत सुंदर लगेंगे. Yes, Jashna, for your question. Yes, marshmallows are absolutely important. They are the key ingredients of this cookies. Otherwise, आपकी जो cookies होंगी, वो एक normal chocolate chip cookies हो जाएंगी. Okay? Right. Okay. So, Kamalpreet, there's this question कि आपका जो 1 cup है, is it 240 ml or 250 ml? 240. 240. Okay. So yes, I guess we have answered all the questions here, and I guess the cookies are also ready. So I think we are done with the session today. Yes, I will send you a good picture, Saloni. You can just post it, or I will just post it. Okay, sure. So yes, ladies, I hope कि आपको आज का session बहुत ही अच्छा लगा होगा. We have covered everything that was there in the module. Pictures आपको group में मिल जाएंगी. अगर आपको recording चाहिए, PDF चाहिए, product list चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आपके ऊपर. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप जाकर के इजीली फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. If you really like the session, I will really request you to please go on Google Play Store and rate us and review us, because it matters a lot for us. बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर करते हैं वो रेटिंग्स एंड रिव्यूज. आपकी रेटिंग एंड रिव्यूज की वजह से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग मोर एंड मोर सेशंस. सो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड रेट अस. इट विल हार्डली टेक 1 मिनट आपका, बट वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच कमलप्रीत. इट वाज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग सेशन विद यू, and I hope to see you all ladies in the next session. Till then, bye-bye, take care, and have a great day, ladies. Bye. Bye, Kamalpreet. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye.